whether registered in country of the contracting government or territory to which the present convention is extended, or unregistered but flying the flag of a contracting government, this is going to apply. Now, the regulation will not apply to ships of war, new ships less than 24 meters in length, existing ships less than 150 gross tonnage, pleasure yachts or pleasure vessels not engaged in trade, fishing vessels, and your exemption will also be for hatchless container vessels. Now, the conditions of assignment, this is in concise. If you want to do in detail, I'll do, but I think we can do in concise. And then we'll do the calculations of how your calculations are done, how your tabular requirements will be met. All this we'll be doing, and then the corrections. Or let us do in detail. We have in detail. Now, for the principal conditions that must be satisfied before freebird may be assigned, the ship has to account for the structural strength, preservation of your reserve buoyancy, physical means of preventing entry of water into hull, safety of crew on weather deck, potential wetness on weather deck, stability in the normal loaded conditions, that is your intact stability. What is the degree of subdivision and stability after suffering prescribed damage? So your seasonal zones, areas and periods that determine the appropriate load line in a particular sea area at a given time of the year are set out in Annex 2. And here you have your tropical, summer, winter freeboard zones. This is the weather criteria. So summer zones are the areas where not more than 10% of wind speed exceeding Beaufort force 8, which is more than 34 knots. Tropical areas, regions not more than 1% of wind speeds exceeding force 8, and not more than one tropical storm in a 10-year period occurs in the area of 5% latitude longitude square in a separate calendar month. So winter zones are all other areas. So it's a criminal offense for the master or the ship owner to allow the vessel to be operated in a zone in upright condition. The relevant midship zone load line would be below the still load water line, and such action would be immediately invalidated all classification, society and load line certification and lead to criminal prosecution. Now we will do certain definitions because sometimes definitions also asked in your exams. So definitions are in regulation 3 of your load line convention rules. So length is taken 96% of the total length on the waterline at 85% of the least molded depth.
or that is from the forward perpendicular, that is foci of the stem, to the arc perpendicular, that is the axis of rudder stalk waterline, if greater. So either it is 96% of total length on waterline at 85% least molded depth, or from forward perpendicular to arc perpendicular, whichever is greater. So either it is LBP or 96% of total length on waterline at 85% least molded depth. Now forward perpendicular is the imaginary perpendicular which is cutting the stem at the salt water line, and arc perpendicular is the perpendicular to your rudder stalk, passing to the axis passing to the rudder stalk. That's arc perpendicular. Amidships is the area half of LBP, so that is midship area or midship of the length L. Breadth is the maximum breadth of ship measured amidships to the molded line of the frame in the ship with a metal shell, and to the outer surface of the hull with the shell of any other material. Now, what is the molded depth? Molded depth is the depth from the deck line to your baseline, which is the top part of the keel. Now, if the ship has rounded gunwales, then the molded depth should be measured at the point at the intersection of the molded lines on the deck and the shell plating, and the lines extending as though the gunwale was an angular design. When a freeboard deck is stepped and raised part of the deck extends over the point where the molded depth is to be determined, the molded depth shall be measured to a line with reference extending from lower part of the deck along a line parallel with the raised part to the top part of your keel or the baseline. Now depth for freeboard D, because this will be required for your freeboard corrections. We have to know this definition. So this is the molded depth amidships plus the thickness of the freeboard deck stringer plate when fitted, plus T into L minus S divided by L if the exposed freeboard deck is sheathed. So there's a sheathing there. So T means thickness of the exposed sheathing clear of the deck openings, and S is the total length of superstructure. So that is depth for freeboard. So depth for freeboard D in ships having rounded gunwale with a radius greater than 4% of breadth, or having top sides of unusual form, that is a top side tank in the bulk carrier, is the depth of freeboard of a ship having midship section with vertical top sides and with the same round of beam and the area of top side section equal to provided by actual midship section. So we can just see what is D there. Now we come to what is block coefficient. So block coefficient done in your stability, it is the amount of material used by ship if you are making from a block. So if you are using a barge, so the block coefficient is 1. So fine land vessel is there, like a yacht, then the block coefficient may be 0.3 or 0.4 or 0.5. Your general cargo vessels, it's about 0.65. Container vessels about 0.75. Bulk carriers, VLC, VLOCs and all, it will be 0.85. Tankers, 0.85. VLCs. Block coefficient, CB, is equal to volume of displacement and draft, that is at 85% of depth for freeboard, that D, depth for freeboard, divided by length into breadth into draft at 85% of least molded depth. So in no case, length is basically not the full length, so that is either LBP or 96% of length at 85% of molded depth, whichever is greater. So CB should not be in less than 0.68 in any case. You can't
take block coefficient less than 0.68. Now the freeboard assigned is the distance measured vertically down amidships from upper edge of the deck line to the upper edge of the related load line. Now what is a freeboard deck? Normally it is uppermost continuous decks exposed to weather and sea, which is permanent means of closing and opening in the weather part thereof, and below which all openings in the side of the ship are fitted with permanent means of watertight closing. So below the freeboard deck, anything you have will be watertight. Anything above freeboard deck will be weather tight. Anything below freeboard deck will be watertight. Now here in this diagram, you have a ship which is got a discontinuous freeboard deck. So you have to measure at the point which is the bottom area, drop a line parallel here to that freeboard deck. So you have to take a continuous freeboard deck. So line parallel to exposed deck, passing to the minimum area which is exposed, that will be your exposed freeboard deck. So this will be your freeboard deck, and this is discontinuous freeboard deck. So in a ship having discontinuous freeboard deck, the lowest line of the exposed deck and the continuation of the line parallel to the upper part of the deck is taken as a freeboard deck. So like sometimes you have ro-ro vessels, and also you have a part which is lowest line of exposed deck here. So you have to take line parallel to this. This will become your freeboard deck and not this top one. Now here the lower enclosed deck taken as freeboard deck. Here the lower enclosed deck is taken like in ro-ro vessel. The lower this is taken as a freeboard deck. So owner may opt to designate a lower deck as a freeboard deck provided it is complete permanent deck at 4.5 direction at least between the machinery space and peak bulkheads. Peak bulkheads are your aft collision bulkhead and forward collision bulkhead. And continuous athwart ships, typical for ro-ro vessels. In these cases, part of the hull that extends above the freeboard deck may be treated as superstructure for the purpose of calculation of freeboard. So anything above this will be taken as superstructure for calculation of freeboard. Now, superstructure has also come in your definition, so we'll read it carefully. A superstructure and a deck structure on freeboard deck extending from side to side of a ship with the side plating not being inboard of the shell plating more than 4% of breadth. That means suppose the superstructure is from end to end. The breadth of the ship suppose is 40 meters. So the side plating inside will not be more than 4% of 40 meters. So that will be 1.6 meters inside. Not more than 1.6 meters inside of the shell plating. Now, what is a raised quarter deck? Now, this you have a raised poop deck or a quarter deck. A raised quarter deck is regarded as superstructure. Raised quarter decks are often associated with smaller ships. So earlier, when you have midship accommodation, like in this kind of diagram, general cargo vessels used to have a raised poop deck. Crew accommodation used to be there.
Officers used to be at midship accommodation. Propeller shaft used to run from right from midship till aft. That used to be a long propeller shaft. The freeboard deck used to be that lowest limit, lower limit here. This one, continuous deck, which is the lowest most part which is continuous. So with the machinery space sighted aft and being proportional larger in smaller ship, that has a tendency for the ship to be trimmed by head while fully loaded to prevent the height of the aftermost hold may be increased or decreased to increase your deadweight aft achieved by means of raised quarter deck. So otherwise your if you didn't have a raised quarter deck or poop deck, it's to go down by head. You used to have this to counter that you used to have a raised poop deck. Now, what is an enclosed superstructure? So, this is a superstructure enclosing the bulkheads of efficient construction. Excess openings, if any, in these bulkheads fitted with doors complying with requirements of Regulation 12. All other openings in the sides or ends of the superstructure fitted with efficient weather-tight means of closing. So, anything about freeboard deck, as I said, will be weather-tight. Anything below freeboard deck will be watertight. This you got to remember in your orals also, because the surveyor can ask you dodgy questions on this. Now, a bridge or poop shall not be regarded as enclosed space superstructure unless access is provided for crew to reach machinery and all other working spaces inside these superstructure by alternative means which are available at all times when bulkhead openings are closed. So if there is no access opening or there is no opening provided by the ship owner to travel, then it will be considered as an enclosed superstructure, otherwise not. Now if you see the term again, a bridge or poop shall not be regarded as enclosed superstructure unless access is provided for crew to reach the machinery, others working space inside the superstructure by alternative means available there. So if they are provided there, then it will be regarded as enclosed superstructure, otherwise not. So the height of superstructure is least vertical height measured at the side from the top of the superstructure deck beams to the top of the freeboard deck beams. So that height of the superstructure, suppose the superstructure is there, then height of this beam here and the height of beam there, the distance between that will be measured as height of superstructure. The length of superstructure is the mean length of the part of the superstructure which lies within this length L. So that's the mean length which has been provided within this 96% of length. Now if you see this diagram, the size inboard set by not more than 4% on the breadth here, this side. So this superstructure will not be more than 4% inside than the shell plating. So that diagram is explaining about superstructure. Now, if there is no superstructure on freeboard deck, then it is considered a flush deck ship like a barge. Barge doesn't have any superstructure on freeboard deck, so it is a flush deck ship. Weather tight means any sea conditions, water will not penetrate into ship. But it doesn't mean that if the ship is summer, the water will not enter. That is, in any sea condition, water will not penetrate sea. Whether what kind of wind force, water will not penetrate sea. But that doesn't mean that the ship is sinking and ship is below water, the water will not enter. Then that is not watertight. Weather tight, that is watertight to prevent water from entering the
compartment if you are submerged. That is watertight. And weathertight means anything at the sea condition, water is not going to enter that area or that compartment. Now we'll come to the deck line. अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछ लो भाई, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आगे करें, क्योंकि अभी हम डिटेल में कर रहे हैं. एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क. क्योंकि लोड लाइन से आप लोग सब घबराते हो, तो मैं आंसर्स देखता हूँ, आप लोग लोड लाइन से क्वेश्चन से बहुत घबराते हो, सबसे पहले उसको ही अवॉइड करते हो. पैसेंजर शिप का पिछली बार आया था, एक्सप्लेन द सोलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैसेंजर शिप सब डिविजन. ये क्वेश्चन आया था अप्रैल में, अप्रैल के एग्जाम में एमएमडी में क्वेश्चन आया था. So I know that you guys are pretty dicey about load line and subdivision. तो समझ के करोगे बेटर है कि रट्टा तो कितना मारोगे. How much you can mug? You can't mug everything, ना. Yes. तो समझना जरूरी आप लोगों के लिए. फरवरी बैच के लिए तो रिवीजन हो रहा है, तो आप समझ लो, ठीक है. Next week I'll be doing past question papers because I'll be finishing your load lines this week and passenger ship subdivision. Next week onwards I'll start with your past papers and then start from scratch. That is वो सारे definition और tension और वो सारा चीज आ जाएगा. Malleability, ductility and stress strain फिर शुरू कर दूंगा. ओके, तो आप लोगों के लिए चलो रिवीजन हो रहा है ये. Now what is a deck line? Deck line is a horizontal line marked amidship on each side of ship. The upper edge is normally passing through the point where the continuation outward of the upper surface of the freeboard deck intersects the outer surface of the shell plating. तो ये deck line है. तो ये point से यहाँ पॉइंट तक जा. अगर ये वुडन शीदिंग है, अगर लकड़ी का जैसे होता था पहले जहाज में, पुराने जहाजों में, तो अगर वो शीदेड डेक होता था तो उसका टॉप पोर्शन लेते थे. स्टील वाला है तो स्टील का भी टॉप पोर्शन ही ले रहे, नीचे नहीं ले रहे. वी टेकिंग द थिकनेस ऑफ द प्लेटिंग, उसका अपर रीजन ले रहे हैं. नाउ हियर वी नॉट टेकिंग द प्लेटिंग बिकॉज देयर इज अ वुडन शीटिंग हियर. तो दिस पॉइंट से इस पॉइंट से नहीं ले रहे, वी टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट to this point if you have a wooden sheathing. So this is your deck line, which is 300 mm. Amidship, the thickness of your deck line will be 25 mm. If you have a rounded gunwale, then there's a correction to be applied. We'll be coming to this correction afterwards. जब radius shear strake होता है इस टाइप का, radius means like a radius, so it is a rounded gunwale, right? So this is your shear strake which is rounded. Here the shear strake is straight. So when the deck line may be placed with a reference to any point on the ship on the condition that the freeboard is correspondingly corrected, then the reference point location and identification of freeboard deck is clearly indicated on the International Loadline Certificate. This is typical in case of ships having rounded gunwale. So this correction has to be applied for your freeboard. We'll come to that. ये rounded gunwale में क्या correction है, that will come later. अब ये लोड लाइन वाला मार्क तो मैं करूंगा नहीं, ये एवरीवन नोज अबाउट इट. ये आप सेकेंड मिड से पढ़ते आ रहे हो, प्री सी से पढ़ते आ रहे हो. लोड लाइन मार्क क्या है? दिस ऑल यू नो अबाउट इट. प्लिंथ मार्क क्या है? तो ये नॉर्मल आपका लोड लाइन है. टिम्बर वाला पीछे की तरफ होगा, नॉर्मल वाला आगे की तरफ होगा. द प्लिंथ मार्क, टिम्बर इज हियर. Okay, why is the timber load line having less freeboard as compared to your normal freeboard? क्या रीजन है भाई? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सेकंड मिड वाला क्वेश्चन.
आपको तो आना चाहिए। टिम्बर फ्रीबोर्ड कम क्यों है नॉर्मल फ्रीबोर्ड से? नॉर्मल फ्रीबोर्ड यहाँ से आ रहा है ना, बिकॉज वाटर एब्जॉर्प्शन का काउंट करते हैं, आइस एक्सेलरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन काउंट वाटर करते हैं। किसका अब्जॉर्प्शन कर रहा है? व्हाट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन? तो टिम्बर विल एब्जॉर्ब वाटर ना, सी स्प्रेज वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए फ्रीबोर्ड कम है ना? बिकॉज सर उसका कार्गो जो है प्रोवाइड्स फॉर एडिशनल बुओयंसी, दैट्स व्हाई एज पर टिम्बर कोड इट इज। भाई हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब्जॉर्प्शन वाला बेटा आपको सबसे पहले बाहर निकालूंगा मैं, अगर मैं सर्वेयर होता सबसे पहले आप बाहर आते। अब्जॉर्प्शन करेगा तो फिर उसको तो रखेंगे नहीं, फ्रीबोर्ड तो बढ़ा देंगे। अगर ये आंसर होता कि वाटर अब्जॉर्प्शन करता, फिर तो मैं फ्रीबोर्ड बढ़ाता ना, क्योंकि वाटर अब्जॉर्प्शन के मेरा शिप तो सिंक हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज द वुड इज गिविंग रिजर्व बुओयंसी देयर। लकड़ी पानी में जाएगी तो फ्लोट करेगी ना, कि पानी अब्जॉर्ब करेगी। लकड़ी की बोट अगर पानी अब्जॉर्ब ही करती रहती तो लकड़ी की बोट बनती ही नहीं आज तक। शुरू से लकड़ी के जहाज बनते थे, लकड़ी की बोट्स बनती थी। वो अलग बात है कि लकड़ी गल जाती है, इसलिए अब लकड़ी को यूज नहीं करते, अदरवाइज वुड इज गोइंग टू फ्लोट ना, वुड इज गोइंग टू सिंक। अब ये बेटा ये तो सिक्स क्लास का क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्लासेस का ही क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, तुमने आंसर किया, लेकिन ओरल में इस तरह से आंसर नहीं करना, थोड़ा समझ के आंसर करना। अब आते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ फ्रीबोर्ड एप्लीकेबल टू ऑल शिप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए बहुत बार आ चुका है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट अलग अलग तरीके से करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। सो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है, इट इज बेसिस योर क्लासिफिकेशन सोसाइटी। अच्छा ये बताओ, क्लासिफिकेशन सोसाइटी तो सबको पता है, व्हाट इज आरओ? कई बार आरओ आपका इंस्पेक्शन करता है, तो व्हाट इज आरओ? रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो आरओ का काम क्या है? रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, यू आर करेक्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ आरओ देन? क्लास को तो चलो क्लास असाइन करता है, आरओ क्या करता है? सर आरओ या फिर क्लास के लिए इंस्पेक्शन करेगा या फिर सर फ्लैग के लिए इंस्पेक्शन करेगा। वेरी गुड, अब एग्जाम्पल देते हैं। दैट्स गुड, यू करेक्टली आंसर, यू आर 100% करेक्ट। आरओ जैसे अगर एससीआई का जहाज है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सोसाइटी आपको पता आईआरएस है, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। तो आरओ फिर कौन बनता है? ये मेरा क्वेश्चन। फिर हु इज आरओ देन? जिसको भी असाइन किया होगा सर, सर्वे करने के लिए आएगा जो। ज्यादातर किसको असाइन करता है? क्योंकि ये क्वेश्चन वही पूछेगा जो आपका उत्तर लेता है। मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया आपको। एमएमडी सर। एमएमडी, आरओ आपका एमएमडी है। तो ये क्वेश्चन एमएमडी आपको पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, क्योंकि वही आरओ है। और अगर उसका आंसर नहीं कर दिया आपने तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा, सीधी बात है कि नहीं? आरओ इज एमएमडी देयर, और एमएमडी कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देता। दे डू इंस्पेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ आईआरएस। फ्लैग स्टेट क्लासिफिकेशन सोसाइटी को अपॉइंट करता है, एंड क्लास फिर बिजी रहता है कई चीजों में, तो आरओ को अपॉइंट करता है उसके बिहाफ पे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो अगर आप देखोगे पैसेंजर शिप में एमएमडी वाले रेगुलर जाते हैं। अब मैं बाकी चीज यहाँ नहीं बोल सकता, क्लास होती तो बाकी बात करता, अभी एमएसटी में ज्यादा बात नहीं कर सकता। क्लास होती तो सामने बात करता। अभी मैं बात वो वर्ड यूज नहीं कर, वो मतलब इंसिडेंट आई कैनॉट यूज दैट,
बिकॉज यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड पे है। चलो अब तो ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। रेगुलेशन 10, तो द इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड टू मास्टर क्या क्या है? So the master of new ship shall be supplied with information, sufficient information in an approved form to enable him to arrange for loading and ballasting of his ship in such a way to avoid a creation of any unacceptable stresses in the ship structure, provided the requirement need not apply to any particular length, design or class of ship where administration considers is to be unnecessary. तो उसके पास सारी information होनी चाहिए so that he can calculate his stresses. That means your load indicator and all should be there on board along with stability data so that he can avoid unacceptable stresses on board ship. Now, every ship which is not required under International Convention for Solace to undergo an inclining test upon completion shall. अब ये inclining तो आप तो कर ही रहो, क्योंकि आपका जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है उसमें तो आप इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट करोगे। सो इंक्लाइनिंग टेस्ट में क्या क्या करना है? एवरी शिप विच इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर दिस सोलस टू अंडरगो इंक्लाइनिंग टेस्ट अपॉन शैल। अगर इंक्लाइनिंग टेस्ट आपने नहीं लिया तो क्या करोगे? टू बी इंक्लाइंड एंड एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड पोजिशन ऑफ CG shall be determined for the light ship condition in case you are not doing your inclining test. Second part, have supplied for the use of master such reliable information in approved form as it is necessary to enable him for rapid processes to obtain accurate guidance for stability. So he should know about he should have reliable information for stability calculations. Carry on board all times approved stability information to go together with the evidence, and that information has been approved by the administration of flag states. And if the administration so approves, have its inclining test on completion dispense with basic stability data available from the inclining test of a sister ship, and it is shown to the satisfaction administration that reliable stability information for ship can be obtained from this basic data. Now, without inclining test, all these 4 points have to be done. So, code of intact stability for all ships covered by IMO instruments details more specifically the information that must be provided to master so that your stability calculation can be accurately conducted for ship safe operations. Now we'll come to the structural conditions for assignment of freeboard. So your bulkheads at the exposed deck, exposed ends of the superstructure shall be of efficient construction. All excess openings and bulkheads at the ends of enclosed superstructure shall be fitted with steel weather-tight doors that are provided with equivalent bulkhead strength when closed. And they must be sealed with gaskets and clamping devices which can be operated from both sides and have sills. Sills basically जो नीचे का portion होता है ना, वो दरवाजे के नीचे, अब जो आप sills बताते हैं क्या है? तो बेसिकली आपका सुपरस्ट्रक्चर यहाँ है, ये आपका दरवाजा सपोज है दिस ओपनिंग, तो इसके नीचे का जो पोर्शन है ना, ये टॉप पोर्शन, ये सिल हो गया, एकदम नीचे से नहीं होता, इट इज लिटिल अबव दिस, क्योंकि आप जब खोलते हो वेदर टाइट डोर्स तो एक सिल के ऊपर होता है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज सिल, ये सिल होता है। सर एक डाउट था सर। हाँ क्या डाउट था? बोल सर थोड़ा ऑफ टॉपिक था सर, इसमें एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि ओरल में कि व्हाई डू वी स्ट्रेंथन द फॉरवर्ड एंड आफ्ट पार्ट ऑफ द वेसल, उसका सर एग्जैक्ट आंसर क्या है? एक मिनट जरा पंखा बंद कर, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, पंखा बंद करना पड़ेगा। हाँ बोलो, रिपीट करो फिर से क्वेश्चन तुम्हारा सुना नहीं मैं।
ओरल्स में नॉर्मली पूछते हैं व्हाई डू वी स्ट्रेंथन द फॉरवर्ड एंड आफ्ट पार्ट ऑफ द वेसल, उसका रीजन क्या है सर? फॉरवर्ड पार्ट एंड आउट पार्ट ऑफ द वेसल, कहाँ से? कील से फॉरवर्ड पार्ट एंड आउट पार्ट, स्टेम एंड स्टर्न की बात करो, किसकी बात करो? देखो इसमें दो क्वेश्चन है। फॉरवर्ड पार्ट मींस बॉटम पार्ट, फॉरवर्ड एंड, आफ्ट एंड, इसकी बात कर रहे हो? या फॉरवर्ड पार्ट मींस कैन बी बॉटम आल्सो, कैन बी टॉप पार्ट आल्सो? सर फॉरवर्ड एंड आफ्ट लिखा था सर। ओके, अब इसमें दो पार्ट हैं, दोनों का आंसर बताने पड़ेंगे। तो फॉरवर्ड एंड आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको वहां स्टेम लगा हुआ है ना, तो पैंटिंग स्ट्रिंजर वो सारे एरियाज लगे हैं, वहां स्ट्रेसेस आते हैं। तो फॉरवर्ड स्टेम पे आपका पैंटिंग स्ट्रिंजर जा रहा है, तो उस एंड को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा, कांट टेक द पैंटिंग एंड पैंटिंग स्ट्रेसेस। Similarly, aft area also has to be strengthened for the panting stresses. अब panting stresses आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भूल गए? यस सर, पढ़ा था सर, पढ़ा है तुमने एक बार? दूसरे लोग चलो तुमको याद है, लेकिन बाकियों को भूल जाते हैं ना, तो एक बार मैं आंसर ड्रॉ करके बता देता हूँ। बेटा जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, मेरे लिए तुम लोग सब ओपन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब क्या है कि ये एरिया जो है, इट विल बी अनकाउंटेड आपके पैंटिंग स्ट्रेसेस। पैंटिंग स्ट्रेसेस होते हैं जब आपका क्रेस्ट वेव आता है, तो यहाँ प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो प्रेशर जब होता है तो अंदर ये पार्ट जाएगा, ठीक है, विद द क्रेस्ट, और जैसे ट्रफ वेव आएगा ये बाहर निकलेगा। सो द दिस इज द चेंजिंग प्रेशर्स इन द फॉरवर्ड एंड आफ्ट एरिया। ठीक है, यहाँ आपका इस एरिया और इस एरिया में स्ट्रेसेस आएगा, which is going to force the plating to go inside, and when the stress is removed it will come out. It's like your bellows, bellow दबाते हैं ना, वो bellow दबाया, हवा निकली, वो छोड़ दिया, फिर अब जैसे एस्पिरेटर करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर का एस्पिरेटर दबाते हैं, दबाएंगे तो दब जाएगा, फिर छोड़ देंगे, बाहर आ जाएगा, हवा आ जाएगी। सो सिमिलर केस, दिस इज द पैंटिंग रीजन। अब यहाँ जब पैंटिंग रीजन होता है तो आपकी यहाँ पैंटिंग स्ट्रिंजर लगाई होती है, ठीक है, और यहाँ ब्रेस्ट हुक होता है इस पॉइंट पे, और यहाँ आपकी पैंटिंग बीम्स होती हैं। पैंटिंग बीम्स कैन बी हियर और इट कैन बी परफोरेटेड फ्लैट आल्सो। बड़े जहाज जिनमें VLOCs होते हैं वो परफोरेटेड फ्लैट होते हैं, अदरवाइज पैंटिंग बीम होती है। तो ये पैंटिंग बीम जो होती है ये इसको मजबूत करती है। सो दिस एरिया इज स्ट्रेंथेंड फॉर withstanding your panting stresses. Similarly, aft area is also for withstanding the panting stresses. So the strengthening is done for panting stresses. लेकिन ड्राई डॉक, चलो मेरा क्वेश्चन है, ड्राई डॉकिंग के टाइम हम टच करते हैं ड्राई डॉक बाय योर स्टर्न फ्रेम आफ्ट, बाय बहुत से क्यों नहीं करते? मेरा ये क्वेश्चन। चलो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया, आइए आंसर बताया, दूसरा क्वेश्चन पूछा, अब बताओ। मैंने ओवरऑल ले लिया आपका। चलो सर स्टर्न को स्पेशली स्ट्रेंथन किया जाता है ड्राई डॉक के लिए सर, क्योंकि पहले Very स्टर्न good. टच होएगा ना। ठीक है, तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है ड्राई डॉकिंग में? सर द टाइम फ्रॉम वेयर स्टर्न टचेस टिल द टाइम bow sits on the dry dock. तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिम सर हल्की ट्रिम रखते जी। वेरी गुड, या तो इवन किल जाओगे, ट्रिम एकदम कम रखोगे, है ना। और अगर जब बाहर निकलोगे तब क्या करोगे? राइट से बाहर निकल रहे हो तब कहां से डाउन बाय हेड होगा, डाउन बाय स्टर्न होगा? सर जो कंडीशन में एंटर करते हैं नॉर्मली डॉक से, उसी कंडीशन से निकलने को बोलते हैं। नहीं नहीं, नॉर्मली जब निकलते हैं, क्योंकि स्टर्न को पहले रिलीज करना है ना, प्रोपेलर मूवमेंट करना है, तो स्टर्न को पहले रिलीज करना है।
तो आप जब बाहर निकलोगे स्लाइटली डाउन बाय हेड होगे, ट्राई करोगे, नहीं तो इवन के लिए निकलोगे बट स्लाइटली डाउन बाय हेड निकलोगे। सो बिकॉज यू हैव टू क्लियर योर स्टर्न, बिकॉज प्रोपेलर मूवमेंट शुरू करना है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो अंदर आओगे तो स्लाइट ट्रिम बाय स्टर्न होगा, स्लाइट ट्रिम, एंड जब बाहर निकलोगे स्लाइट डाउन बाय हेड होगा। ठीक है, चलो छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके ओरल के पूछ लिए। क्लियर आंसर कि नहीं ओरल का? हाँ यस सर, यस सर। क्लियर हो गया कि क्लियर हो गया? चलो अभी 3 मिनट बचे हैं, ये ओरल क्वेश्चन ही पूछ लो भाई, 3 मिनट बचे हैं, यही पूछ लो क्योंकि पढ़ाई उसके बाद शुरू करेंगे। 10-10 मिनट टाइम आपको दूंगा, आप अपने अपने क्वेश्चन पूछ लो ओरल के। मेरा एक और क्वेश्चन है, तुम लोग के लिए आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लटका दिया था एक बंदे को, फिर उसने डायरेक्टर को फोन किया, उसने मेरे को फोन बात कराई, मैंने आंसर देकर उसको पास करा दिया। मेरा क्वेश्चन वही है, जो आप टैंकर में, केमिकल टैंकर में सफाई कर रहे हो, वाइट वॉशिंग मतलब टैंक क्लीनिंग कर रहे हो, अब उसमें वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं टैंक की कोटिंग में, तो वो चीज क्या है, वो किस चीज से आती है? टैंक क्लीनिंग कर ली ना आपने, सॉल्ट वाटर से कर ली, सारा वॉश कर लिया, सॉल्ट वाटर से आपने पूरा वॉश कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उधर से वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं टैंक पे, चीज क्या है, व्हाट इज दैट? आप आंसर मुझे बताना चाय के बाद, आपके पास टाइम है। और इसी क्वेश्चन पे एक कैंडिडेट को होल्ड कर दिया था उसके ओरल, आंसर नहीं बताओगे तो फेल। उसको टाइम दे दिया था 15 मिनट, तुमको जिसको फोन करना है फोन कर लो, 15 मिनट दिया था उसको, तो 15 मिनट में उसने फटाफट फोन मारा और उसको आंसर मिल गया, पास भी हो गया। ठीक है, चाय पियो, उसके बाद ये आंसर करेंगे। ठीक है, चाय के बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो 15 मिनट ब्रेक ले लो भाई।